बेंगलुरु के मणिपाल हॉस्पिटल्स ने वर्ल्ड हार्ट डे पर SOS QR कोड और CPR एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया है। इस तकरीब में कर्नाटक के वज़ीर दाखिला डॉक्टर जी परमेश्वर, सेहत और ख़ानदानी बहबूद के वज़ीर दिनेश गुंडूराव ने शिरकत की। ये अस्पताल बेंगलुरु को हार्ट स्मार्ट सिटी बनाने के लिए पुरअज़्म है और मणिपाल हॉस्पिटल्स ने हुकूमत कर्नाटक को तमाम तालीमी इदारों और शहरी इदारों में भी CPR तालीम को लाजमी बनाने की तजवीज़ पेश की है। ट्रैफिक सिग्नल्स को दिल की शक्ल में तब्दील कर दिया है। एम्बुलेंस की खिदमात तक आसान रसाई के लिए इन सिग्नल्स में कोड होते हैं। डॉक्टर जी परमेश्वरा ने इस इक़दाम की भरपूर सताइश की है। I personally appreciate and certainly encourage this initiative, which is definitely going to be a more useful one. So this initiative is going to definitely help everybody in the society. And as you are asking me to take up this as a government initiative to start teaching in schools, I think we can do that. Dinesh and myself will definitely take this forward with the government, Ministry of Education, primary, secondary or higher education. Will definitely take this initiative. As a health minister, he has a more power with him to take this initiative at the school level or the college level. मणिपाल हॉस्पिटल्स अहम मकामात और गाड़ियों पर भी QR कोड का इस्तेमाल करते हैं ताकि हंगामी हालात के दौरान आसानी से रसाई हो सके। कोड्स को स्कैन करने से मणिपाल एम्बुलेंस रिस्पॉन्स सर्विस और 108 एम्बुलेंस को ऐन वक्त में मरीज़ के मकाम की जानकारी मिल जाती है। दिनेश गुंडूराव ने गोल्डन आवर के दौरान फौरी मदद के लिए अस्पताल के अज़्म की सताइश की है। We hope that we can work more closely along with government. We can collaborate more, work together more, because Bangalore has got so much already in it. So many medtech companies are there, so many wonderful hospitals are there. Everything that medical field requires is there in Bangalore, and Bangalore can become a showcase and bring in new initiatives which can help people across India also. मणिपाल हॉस्पिटल्स बेंगलुरु को हार्ट स्मार्ट सिटी में तब्दील करने के लिए मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ ताउन कर रहा है। कॉरपोरेट सरबराहान, कॉलेज के सरबराहान, स्कूल के प्रिंसिपल, बाइकर्स क्लब एसोसिएशन के सरबराहान, अपार्टमेंट एसोसिएशन के सरबराहान और L&T तामीराती कारकुनों ने अपने ताउन का वादा किया है। मणिपाल हॉस्पिटल्स के चेयरमैन डॉक्टर सुदर्शन बल्लाल ने बेंगलुरु में आलमी मेयार की खिदमत और कार्डियक केयर को अहमियत दी है। Manipal, as you are aware, is a very patient-friendly and extremely heart-friendly hospital. We have always advised people to take care of their heart, not just give their heart, but also take care of their hearts. And we have some distinguished cardiologists and cardiac surgeons with us who will talk to you more about this. Get this QR code out for emergency services. As human beings, everyone in medical school has been taught that whenever there is an emergency, we either fight or we take a flight. So we either fight or run away from the situation. We want to introduce a third concept, that is seek help in these kind of situations, because normally when there is an immediate person you know, family member, friend, has a heart attack or something very bad happens to them, you panic. So also what we see over and over again is when there's an accident at the road, the person who's involved in the accident panics and he either runs away or just freezes. So the person who has met with the accident is injured, is left like that with the crowd gathering and not knowing what to do. So we wanted to modify this so that whenever there is an accident or an emergency, there are these QR codes available. It can be on your phone, it can be in your car just like a FASTag, it can be on your helmet, it could be on the traffic lights that you just saw with the heart sticking, and you just flash that or scan that code, and automatically one of the ambulances of the Manipal hospitals will get activated, no questions asked, and the ambulance is rushed to the spot as early as possible.